lines. Now the only portion that is remaining is aromaticity, aromatic compounds. Okay. So please write the topic aromaticity. Now, there are certain conditions for aromaticity and for aromatic compounds. So we'll look at those conditions. Please write with me. Now, the basic conditions for aromaticity are three. Please write number one. Molecule should be planar. Molecule should be planar. Okay. How to identify whether a molecule is planar or not? So for that, please write meaning no carbon atom should have more than 3 sigma bonds. ठीक है, उसके पास there should be no carbon atom with more than 3 sigma bond. 3 sigma bond ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए. ठीक है, they should only have how many sigma bond? They should only have 3 sigma bonds. ठीक है, they should only have 3 sigma bonds, या फिर उससे कम हो सकता है, बट बेसिकली आपका 3 में काम चल जाएगा. ठीक है. Second is complete delocalization of pi electron. अब इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका? दैट देयर शुड बी रेजोनेंस इन द रिंग. रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए. ठीक है, दैट मींस डीलोकलाइजेशन कैसे होगा पाई इलेक्ट्रॉन को? इट इज पाई, अच्छा, delocalization of pi electron is what? It is resonance. And complete delocalization of pi electrons means that each and every carbon atom should be involved in the delocalization. So it should be ring. Fine. So right, resonance in ring. Okay, this is how you are going to identify. This is not the part of condition. Okay, this is not a condition. Resonance in ring. What is the condition? Complete delocalization of pi electron. How will you identify it? You will identify by resonance in ring. The third condition is there should be four n plus 2 pi electron where n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n is equal to 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा. मीनिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो हो इज इक्वल टू, चलिए अब जरा माइक ऑन करके बताइए. इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ n एज 0, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ आई पुट n इज इक्वल टू 0, 2. 2 होगा ना रिशिता? यस सर. ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं. अगर हमने 1 रख दिया, इफ आई कीप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 1, हाउ मच? 6. 6 है ना. 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 14 हो सकता है, एटसेट्रा. गॉट इट गाइस? यस और नो? प्लीज टेल मी. यस सर. Yes, sir. ठीक है, सो दीज आर व्हाट कंडीशन. सो प्लीज राइट दिस डाउन. रेज योर हैंड वंस मोर.
Write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Khadija, Martin, and Rishita. Okay. No. Write the question. Identify aromatic compound with reasons. ठीक है? Like otherwise, if you don't write the reasons, then आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है? See, let's suppose we have the first question. Cyclohexane. Now, what are the different conditions? आपको क्या क्या चेक करना है? That all carbon should be sp2. There should be ring. और उसके बाद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे. ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको देखना है. तो पाई इलेक्ट्रॉन कैन बी 2, 4, 2, 6, 10 इस तरह से ना पाई इलेक्ट्रॉन. Now, if you look at this first carbon atom, ये देख लीजिए आप. This carbon atom is what? It is having only sigma bonds, right? Only single bond. Double bond होता तब तो sp2 होता. So obviously, this carbon atoms are not sp2. That is why not aromatic. I hope you can see that this carbon atom, it is sp3 because it is not having any double bond ना. If you have one double bond, तब ये sp2 होता है. If you have two double bond, then it is sp. If you have one triple bond, then it is sp hybridized. And if there is zero double bond or triple bond, then it is what? It is sp3. You guys remember this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right? ठीक है. Yes, Now sir. this is obviously what? Yeah, you're saying something, Rishita? No, sir. I just said yes. See, next is, let's suppose you have something like this. Right? So you can see all the carbon atoms are involved in a double bond. So you can say yes, all the carbon atoms are sp2. That is true. But the ring is not present. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है. Third question, please see. Now, if you look here, all the carbon atoms, this is also involved in double bond, this is also involved in double bond, and this is also, it is going to have only one hydrogen because it has a negative charge. Agar negative charge nahi hota, then it would have two hydrogens, but it is having a negative charge. It is only because hydrogen has been removed from here. So you can say that this is what? All of these carbons are what? They are sp2 hybridized, or they have only three. They have only three sigma bonds. So sp2 hai. Ring is also present. Now, now what about the pi electrons? Please see. पाई इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करें, सो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ना, ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दिस कैन मूव हियर. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा रेजोनेंस के थ्रू, एंड यू कैन सी दैट दिस नेगेटिव चार्ज कैन आल्सो बिकम पाई इलेक्ट्रॉन. सो द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू हाउ मच? वन बॉन्ड, it has two electron. One negative charge also has two electrons, so total number of pi electron it is equal to 4. So is this according to the criteria of aromaticity, yes or no? 4 pi electrons. Yes or no? Yes, sir. Akim? Yes, sir. pi electron 4 हो तो चलेगा, aromatic हो जाएगा? No. नहीं ना. हाँ नहीं. ऋषिता,
2, 6. No, sir. मेक सेंस? Yes, sir. रिशिता, Yes, sir. पक्का ना? तो बिकॉज दिस 4n+2 pi electron वाला रूल is not applicable, I mean it is not followed, that is why it is also not aromatic, है ना? ये भी this is also not aromatic. Make sense till now? Yes, sir. जल्दी से लिखिए जरा इसको. Sir, can you give an example where it is aromatic? अरे बहुत एग्जांपल आएंगे अभी. ये तो स्क्रीन खत्म हो गया, इस वजह से हम रुक गए. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक लिख लीजिए तो फिर यू रेज हैंड, वी विल डू एटलीस्ट 6 more questions. जल्दी लिखिएगा बट रेज योर हैंड क्विकली. Waiting for Amna and Martin. Waiting for Martin. Try this one. Tell me, are all the carbons sp2? Tell me, guys, are all the carbons sp2? 1, 2, 3, 4. Yes, चेक करके sir. बताइए. All of them are having one double bond ना. देखिए, फर्स्ट कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के पास भी, थर्ड के पास भी, फोर्थ के पास भी. What about the ring criteria? Yes, sir. Yes, it is a ring. How many pi electrons do we have? 4. 4. है ना? So again, because it is not following the last criteria, it will not be aromatic. Make sense? Yes, sir. ठीक है. Let us see another. Here sp2 criteria is there, yes or no? All carbons are Yes. sp2. Yes. Ring. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And what about pi electrons? 2. 2, because it is a positive charge, है ना? देखिए चार्ज देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या चार्ज है तो फिर यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भाई. इट इज पॉजिटिव चार्ज ना. पॉजिटिव चार्ज मींस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. So the number of electron will be only 2. So tell me, this will be aromatic or not? Aromatic. है ना? Yes, This sir. 2 electron is also the correct. So this will be aromatic. Tell me here, sp2. Yes or no? Yes. Yes, all carbons are sp2. Ring. Yes, Yes. sir. And pi electrons. 4. 4. So this criteria is not followed. That is why it Yes, will sir. not be aromatic. Make sense? Yes, sir. Tell me. sp2. Yes, sir. Yes. Sir. Ring. Yes, Yes, sir. Is also there. And pi electrons. 5. 5. नहीं नहीं, 6 ना. 5 कैसे होगा? देखिए नेगेटिव चार्ज कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड ना. ये तो डबल बॉन्ड सीधा बना लेता है, राइट? सो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है
देखिए, अगर आप लोगों को शायद याद नहीं हो, लेकिन हमने बताया था नेगेटिव चार्ज इज एग्जैक्टली अ लोन पेयर। एक लोन पेयर की वजह से ही आपके पास नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज मींस इट इज 2 इलेक्ट्रॉन। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, so Yes this sir. criteria is also followed, so this will be aromatic। ठीक है, बेंजीन का केस अभी तक हमने नहीं लिया बिकॉज बेंजीन आप लोग को पता है बेंजीन इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए 7 8। टेल मी ऑल द कार्बन्स आर sp2। Yes sir. नहीं नहीं Yes. नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे देख के नहीं देखी। दिस कार्बन इज sp2। No sir. दिस कार्बन, इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना रशिता, देखिए, ना ही इसके Yes पास कोई, sir. राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज sp3। सो ऑल कार्बन्स आर नॉट sp2। गॉट इट? Yes sir. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? ऑल कार्बन्स आर sp2। No sir. ठीक है, ऑल कार्बन्स Yes आर sir. नॉट। यस सर। No sir. So that the one which is not connected to any double bond, that's sp3. हाँ, ये sp3 Okay. होगा ना। ठीक है, 10th। इसके बारे में ना हम आपको लिखेंगे, डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस वन। So you have double bonds like this. See here, all the carbons are sp2। सारे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। All the 8 carbon atoms are sp2, they have having one double bond, and it is also a ring, but it is not planar, but not planar. Actually, like when you have so many carbon atoms, this kind of make a tub type of shape. So it looks like this exactly. This is the structure. This is the actual structure of the molecule. ठीक है, so you have one carbon atom here, the other double bond here, and one double bond here, and the other double bond here. You can see there are 8 carbons here, but it acquires a tub shape because of strain. Because of some kind of strain, what happens? It acquires a tub type of shape. So it is not planar, and that is why it is not aromatic. Therefore, not aromatic. Actual shape. What about this one? Are all carbons sp2? Check each carbon and tell me. No sir. कौन सा कार्बन नहीं है sp2? सर टू कनेक्टेड है या फिर अलग अलग लेना है? एक एक क्या? बेंजीन अलग, दूसरा बेंजीन अलग। नहीं, ये कनेक्टेड है, फ्यूज बेंजीन है। ओके सर, फ्यूज देन इट बेंजीन, इज। वन कंपाउंड। ऑल sp2 ना, देखिए सब में डबल बॉन्ड है। ठीक यस है, इट इज ऑल्सो रिंग, राइट? एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बताइए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 10। 10। ring and pi electron.
it is equal to 10. So ring भी है, pi electron 10 भी है, so it is going to be aromatic. Correct. Copy this down. Sir. Raise your hand once you're done writing. Let me know if I have to scroll up. Please raise your hand once you're done. Waiting for Khadija and Martin. Waiting for Khadija, and Martin. Guys, please raise your hand if you're done. Waiting for Khadija and Martin. Guys, let me know if you are still not done. Okay, so these are the examples. I hope there is no issue here, right? हाँ जी बताएं. No, sir. है ना? ठीक है. Now we have benzene ring. ठीक है. तो benzene के बारे में there are some properties, chemical properties वगैरह that too we can once we are done with the method of preparation. So we will write here. First start with method of preparation of benzene. अच्छा, ये बेंजीन का एग्जांपल नहीं दिया हमने, तो बेंजीन लेकिन होता है. ठीक है. आई होप यू गाइस विल रिमेंबर बेंजीन ही एरोमेटिक. भाई इसको भी लिख लो यार तुम लोग. यार 12 नंबर सवाल. बेंजीन रिंग, दिस इज एरोमेटिक. all are sp2, it is a ring, and pi electron it is equal to 6. ठीक है. इसके बाद you will write the topic method of preparation of benzene. Now there is one exact reaction that we have already done.
which is cyclic polymerization of ethyne. Cyclic polymerization of ethyne. सेकेंड रिएक्शन ये भी देखा हमने, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं, करो डीकार्बोक्सिलेशन. Decarboxylation, carboxylation of aromatic acid. What is the meaning of aromatic acid? That means you have benzene ring, and in benzene ring you have attached COOH. Once you react this carboxylic acid with NaOH, you will get COONA. And after you get the sodium salt of benzoic acid, you add here NaOH once again and CaO. That is basically the soda lime. And with a little bit of heat, it is going to give you benzene plus Na2CO3. Okay, so this is how we can prepare benzene via decarboxylation. The third method of preparation, it is almost like magic. Reduction of phenol. Reduction of phenol. You react phenol with zinc dust. जैसे जादू लग करते ना, छू छा ऐसी तरह से, बालू वालू केक के उसी तरह से zinc dust and you will get benzene. Reduction of phenol. Write this down, raise your hand once you're done. Waiting for Khadija, Khudeja, and Rishita. Just waiting for Khudeja now. Khudeja, let me know if you are not done. After this, you are going to write chemical properties. Now, in order to understand the chemical property of benzene, we have to look at the structure of benzene. So, since the structure of benzene is with alternate double and single bond,
which will show resonance, and it can also be like this. This means it has a resonance hybrid structure. The resonance hybrid structure of benzene, it is going to look something like this. Okay. What does this mean? It means that benzene does not have pure pi bond. Pure double bond यहाँ पे होता ही नहीं है. ठीक है. So you will write here as benzene shows resonance, none of its double bond, none of it, एक सेकंड ऐसे लिखिए, रेजोनेंस नन मत लिखिए, all the bonds have partial double bond character, meaning none of the bonds are purely double bond. None of the bonds are purely double bond. Hence, it does not show. Hence, it does not show characteristic reaction. Characteristic reactions like alkene. Does not show reaction like alkene. Alkene में we have double bond, right? We have double bond, and addition reaction occurs for alkene. But those addition reactions are not shown by the benzene. Okay? So what are the reactions? Addition reactions. Why it is not shown? Then you will write because benzene show resonance. All the bonds have partial double bond character, and none of the bonds have purely double bond character. Therefore, it does not show addition reaction. है ना? या फिर reaction like alkenes. इसका एक बहुत खास बात ये होगा that benzene and its derivatives do not decolorize bromine water or Bayer's reagent. ठीक है, ना ही ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करेगा, ना ही ये Bayer's reagent, बिकॉज बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन की ही टेंडेंसी होती है. ठीक है, राइट दिस डाउन. तो बेंजीन रिएक्शन कैसा शो करेगा? सो प्लीज राइट नेक्स्ट पॉइंट. As benzene is electron rich due to multiple pi bonds. अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, सो व्हाट वी कैन से इट कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल. मल्टीपल pi bonds, कहाँ देखेंगे, इट कैन react with electrophile. It can react with electrophile and shows electrophilic aromatic substitution reaction. एक और यहां पे लिख लीजिएगा, बेंजीन can show addition reaction. So can you scroll up 1 second? एक सेकंड. In drastic conditions.
जब अगर हाई हीट वगैरह दे दें तब ये एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा, जब इसको आप मजबूर कर दें। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Raise your hand once you're done, guys. Only Amna is done. Waiting for Akib, Khatija, Mata, Shita. क्या Akib is done? यहाँ तक समझ में आया? ये सुनो गाइस, आकिब, ऋषिता, आमना। Yes, sir. Yes, sir. Khadija, let me know if you are there in the class. Guys, you will write next electrophilic aromatic substitution of benzene, है ना? The type of reaction benzene shows. You write electrophilic aromatic substitution. अब इसको ना बिल्कुल दिल से लगा के रखिएगा, ये रिएक्शंस they are going to be in each chapter that you are going to have in standard 12th. Class 12th में you have one complete book on organic chemistry. In that you have 4 main chapters on organic chemistry, and you will see these reactions. There are these particular 5 reactions in all the chapters. ठीक है, तो इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, प्लीज राइट द फर्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। अब बिल्कुल पेन वन छोड़ दीजिए, ध्यान से देखिए। ऑब्वियसली द रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे तो बेंजीन तो होगा ही। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या चाहिए आपको? यू नीड टू हैव कॉन्क। कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. What will happen? बेंजीन रिंग पे एक NO2 लग जाएगा. You will get nitrobenzene. You will get nitrobenzene. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, अब sir. ध्यान दीजिए जरा. What is the electrophile यहाँ पे? So you know that benzene is going to attack on electrophile and join it. Electrophile यहाँ पे क्या होगा? NO2 positive.
NO2 पॉजिटिव में बेंजीन अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको न्यूट्रलाइज करके अपने पास रख लेगा. सो NO2 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल. सो इस सवाल इसमें फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आई टोल्ड यू व्हाट इज द electrophile. In the rest of the other reactions, you will tell me what is the electrophile. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बस जो भी चीज बेंजीन पे लग रही है, whatever group is getting attached on benzene with a positive charge will be electrophile. Got it? Yes, sir. This is nitrobenzene. Right, the next reaction. Halogenation. Now, halogenation, it has two reactions. दो reactions होते हैं इसमें. Please see. You have benzene ring. Fine. If we are doing this reaction in the presence of Cl2 and anhydrous I need to stretch this now. Anhydrous AlCl3. Then in this case, the benzene ring will have a chlorine attached to it. Similarly, if we are using Br2 in the presence of, we can use अच्छा anhydrous AlCl3 की जगह आप FeCl3 भी यूज कर सकते हैं. For Br2 you can use FeBr3 and you will get benzene ring and a bromine attached to it. ठीक है. So for this reaction, this above reaction, यहाँ पे आपके पास for chlorine Cl positive is the electrophile और फिर bromine के लिए Br positive is the electrophile. ठीक है. How the electrophile are made, we will look at them. But आपको ये दिखना चाहिए कम से कम कि Cl positive electrophile और यहाँ पे Br positive. ठीक है. Now what are the names for these? This will be chlorobenzene, and this is bromobenzene. ठीक है. तो अगर in general these are known as halogenation. Specifically to make chlorobenzene, you need to do chlorination of benzene in the presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3. For bromination, you need to do bromination of benzene. है ना. अगर आपको bromobenzene चाहिए, so you need to do bromination. नाइट्रेशन लिख लिया क्या आप लोगों ने? आर यू डन विथ नाइट्रेशन? Yes, यस और sir. नो बोलते. नो वाले बोले. इफ यू हैव नॉट डन लेट मी नो. इफ यू हैव नॉट डन लेट मी नो. थर्ड इज सल्फोनेशन. Sulfonation. So in sulfonation we use benzene ring plus concentrated H2SO4 only. अच्छा, साथ में इसके SO3 गैस भी यूज किया जाता है, बट वी डोंट हैव टू राइट इट डाउन because SO3 gas is not really added. If you have sulfuric acid, so sulfuric acid it gives a fume, and that fume is of SO3 gas, sulfur trioxide. But what you will get here, you will get benzene sulfonic acid, which will have this type of structure. Benzene with SO3H. This is benzene sulfonic acid. Now, what is the electrophile? It is SO3H, the positive charge on sulfur. Raise your hand once you're done.
Raise your hand once you are done. जल्दी लिखिए गाइस. Waiting for Amna, Khadija, and Martin. I hope you guys have done at least till hallucination. Let's see. The fourth one is very important. Please leave your pen aside and see. This is Friedel Craft. The Friedel Crafts. Craft में apostrophe s होता है कि I think there is no apostrophe s. These are two names. Friedel Crafts alkylation. Now in Friedel Craft alkylation, you start with benzene ring. Plus alkyl chloride RCl in the presence of anhydrous AlCl3, and the alkyl group will attach on benzene ring. Alkylation का मतलब alkyl group आप attach कर रहे हैं, right? So the alkyl group like this, it is going to attach on the benzene ring R. So the electrophile is R positive, है ना? Carbocation बन रहा है आपके पास, ठीक है? So carbocation. And now please see, I'm going to give you some different examples. Benzene ring plus, let us suppose you have simple CH3Cl anhydrous AlCl3. So benzene ring और इस पे क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा, ठीक है? Let us suppose you have benzene ring plus CH3 CH2Cl. Then in this case, the benzene ring will be as it is, and what you will attach CH2CH3. जहां पे क्लोरीन लगा हुआ था उसके वहीं पे, है ना? So the carbon which was attached to chlorine, that will be attached with the benzene ring CH3. Similarly, if you have something like this, benzene ring plus isopropyl chloride CH3 CH and CH3, and above you have Cl. यहाँ पे anhydrous AlCl3 है, ठीक है? I'm just putting some commas here. Benzene ring. Now this carbon is what? The carbon in which chlorine was present. So it is going to be like this. Similarly, if you have something like this, chlorine anhydrous AlCl3. I hope you can see that all the carbon atoms are same. Even if I am going to add the group here, it is not going to change anything. है? सारे के सारे carbon atoms same. So what are the names here? You can also write the name. This is methyl
benzene. This is ethyl benzene. This is isopropyl group. This is isopropyl benzene. And this is tert butyl benzene. Please write the spindle craft allocation. Raise your hand once you're done. बात समझ में आ गई ना? कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग? Yes or no? Tell me, guys. आमना, खदीजा, रिशिता, आकिब. Yes, sir. Wherever the chlorine is, उसी कार्बन को बेंजीन से अटैच करना है. Remove the chlorine, and the remaining alkyl group is attached on the benzene ring. Yes, sir. ठीक है, write this down. Raise your hand once you're done. I'm lowering the hand of Khudeja and Amna, so please raise the hand once again if you're done. अच्छा, Amna, you're done? अच्छा, no, not done. Raise your hand once you're done, guys. Waiting for Amna and Khadija. चलिए, guys, see next. Next one is pretty straightforward.
See you guys. This is 5th. This is Friedel Craft's acylation. Now in this, what do? We react benzene ring with acid chloride, CH3, C double bond O, Cl, in the presence of, once again, the same thing, that is AlCl3, the anhydrous AlCl3. Here also same thing happens. The chlorine is removed, and benzene ring gets a bond with the carbon with oxygen. तो ये जो carbonyl carbon है, the CO, इसके साथ, so you'll have carbon double bond O and then CH3. Now this is known as acyl group, और इसको बोलते हैं, this is acetylation भी बोलते हैं ना, acylation जो कर रहे हैं हम, ठीक है. Now the compound name is going to be acetophenol. I will write it later. We can use another reagent, that is CH3, C double bond O, bonded with O, C double bond O, and then CH3. Here also you'll use AlCl3. Now this is acetic anhydride. It looks very big, but अब ये देखिए, this is acetic acid CH3COOH, और एक और acetic acid, और मतलब anhydrate मतलब हाइड्रोजन हटा के 2 acetic acid लगा दें, that's it. ठीक है, बीच में आपके पास ऑक्सीजन होगा. So here also the same thing happens. This whole thing goes away and you get the same product, that is benzene ring with carbon, C double bond O, and CH3. Both of these compounds are seen, that is acetophenol. Write this down, raise your hand once you're done. अच्छा, आप लोग को ऑर्थो, मेटा और पैरा याद है? Guys, tell me. Ortho, meta, and para. Yes, sir. What about others? Rishita, Amna. याद है ना? ऑर्थो, मेटा, पैरा. प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप, ये भी याद है? Yes, sir. Raise your hand quickly once you're done. जल्दी लिखिए, 2 ही रिएक्शन. Write it fast. गाइज, अगर आपके फाइनल्स का डेट शीट मिले तो प्लीज फॉरवर्ड मी एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है? अगर Yes, sir. आपके टीचर्स ने डेट भी बताया, डेट शीट छोड़िए, डेट भी बताया ना, 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, इस तरह की अगर कुछ नोटिस आती है, टीचर लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं, तो प्लीज लेट मी नो. ओके Sir, they told that they'll start in the 3rd week of January, pre-boards. प्री बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द प्री बोर्ड्स. ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन. आपने बता दी, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, आमना, यू आर सेइंग समथिंग. February first week. सॉरी, व्हाट? February first week में start होगा. फरवरी में स्टार्ट होगा ना? ओके, फाइन. Yeah. ठीक है. So mine is also February 1st week. फरवरी फर्स्ट वीक, ठीक है. जनवरी में किसी का स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो वो हमको बहुत जल्दी बताइए, बिकॉज जनवरी में स्टार्ट होना नहीं चाहिए ना. एटलीस्ट दे शुड गिव द नोटिस एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर. 2 महीने पहले तो कम से कम पता रहे बच्चों को कि हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि 1 हफ्ते पहले बताते हैं कि अगले हफ्ते January pre-board will be there.
ठीक है, फाइन। प्री बोर्ड ठीक है, 11th का प्री बोर्ड इट्स नॉट, आई मीन कोई भी प्री बोर्ड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, रियली डिपेंड्स ऑन द स्कूल ऑल्सो, बट जनरली प्री बोर्ड्स उतना मैटर नहीं करता। वो आप लोग को डराएंगे कि प्री बोर्ड्स में अगर फेल हो गए तो आपको हम ये नहीं देंगे वो नहीं, बट ऐसा नहीं होता। उनको भी अपना पासिंग परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है। लाइक इट्स नॉट अ गुड इमेज ऑफ अ स्कूल ना, कि अगर वहां पे बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे अगर रिपीट कर रहे हैं तो ठीक है, तो जनरली वो आपको देंगे। प्री बोर्ड उतना नहीं, बट हाँ फाइनल का प्रिपरेशन सही रहना चाहिए। ऑल्सो आई थिंक, पता नहीं खैर, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, होपफुली लिख लिया हो Yes, sir. ना, ठीक है। सी राइट, नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज द डायरेक्टिव इफेक्ट, डायरेक्टिव, प्लीज राइट, डायरेक्टिव influence of groups, ठीक है। So we have two types of groups. We have plus m groups. Now if you remember something about plus m group, they increase electron density at ortho and para position. Therefore they increase reactivity towards electrophilic aromatic substitution, ठीक है। प्लस एम ग्रुप है तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, because we have more electrons in the benzene ring, because plus m group what it will do, it will push electron density on the benzene ring, and if you have any plus m group attached on the benzene ring, that substituted benzene with a group, it will react faster towards electrophilic aromatic substitution than benzene, ठीक है। therefore plus m group वाला benzene is more reactive than benzene, than normal benzene, है ना। प्लस एम ग्रुप लगा हो वो बेंजीन, और और नॉर्मल बेंजीन है प्लस एम वाला ज्यादा होगा। इसमें एक कैविएट है बस, दैट इज एक्सेप्ट हैलोजन। क्लोरीन ब्रोमीन लगता है तो क्लोरीन ब्रोमीन इट हैज अ वेरी हाई माइनस आई इफेक्ट, दैट इज वाई वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं उसको, आप अभी रहने दीजिए, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट इन जनरल क्या बोलेंगे, बेंजीन में इफ यू हैव प्लस एम ग्रुप अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग and then you have a normal benzene, the plus m group will, what it will do, it will increase the reactivity। अच्छा, next thing is that ये तो reactivity हो गया, कौन faster होगा। now if you see it increases the electron density at ortho and para, you can also write attack occurs via ortho and para positions, because यहीं पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, सो वहीं से ज्यादा अटैक होता है, एंड दे फॉर्म एंड दे गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, देन इट अटैचेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट माइनस एम ग्रुप, इसको थोड़ा सा हम रन दे देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माइनस एम ग्रुप्स, then they decrease electron density at ortho and para positions। तो ऑर्थो और पैरा में तो डिक्रीज हो गया, बचा कौन सा पोजीशन, टेल मी गाइस, कौन सा बचा। अरे भाई ऑर्थो एंड पैरा में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ना, व्हाट पोजीशन इज रिमेनिंग, ऑर्थो पैरा के अलावा क्या होता है, मेटा। Ortho, para, and meta. मेटा होता है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मेटा में जितना था उतना ही है, ठीक है। सो राइट पोजीशन, देयरफॉर अटैक अकर्स वाया मेटा पोजीशन and they give meta products। ऑल्सो वी कैन से, अगर माइनस एम ग्रुप है तो माइनस एम की रिएक्टिविटी कम होगी किससे, बेंजीन से,
ठीक है, बेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज दे डिक्रीज reactivity towards इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा ऐसे माइनस एम ग्रुप को और क्या बोलते हैं? दे आर AKA डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसको बोल सकते हैं आप AKA दे इंक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बोल सकते हैं आप एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, है ना? क्या होता है AKA एक्टिवेटिंग। Raise your hand if you're done writing this. Waiting for Amna, Khudeja, Martin, and Rishita. Waiting for Khudeja and Martin. Khudeja and Martin. देखिए इधर. So if you have plus M group and I'm doing bromination, chlorination, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, acylation, उन सबका आपको इलेक्ट्रोफाइल पता है क्या है? What is the electrophile there, right? है ना? So if you have plus M group, then you will get two products. एक बार ये तो प्लस M group ऐसे ही का ऐसे सेम रहेगा. बेंजीन रिंग में रिएक्शन हो रहा है, so बेंजीन रिंग में कहाँ लगेगा? You will get one product in which it is in the ortho position, or you will get one more product where it is in the para position. अब तक जो हमने लिखा था उसका यही मतलब है, प्लस एम ग्रुप है तो दूसरा कहाँ मिलेगा आपको? पैरा पोजिशन में. नाउ इफ यू हैव अ माइनस एम ग्रुप, and you are doing a reaction of electrophile, so you'll get only one product where the minus m group is as it is. वो उसको कुछ नहीं होगा, वो वहीं रहेगा. बेंजीन के मेटा पोजिशन में you will get the electrophile attached. ब्रोमिनेशन कर रहे तो ब्रोमीन लग जाएगा, क्लोरीनेशन में क्लोरीन, नाइट्रेशन में NO2, alkylation R group will be attached. Got it guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Write this down.
प्लस एम ग्रुप ना, यहाँ पे प्लस एम ग्रुप्स लिख लीजिए, कौन कौन से होते हैं प्लस एम ग्रुप। CH3 विल बी प्लस एम ग्रुप। उसके बाद और आपके पास NH2 विल बी प्लस एम ग्रुप। व्हाट एल्स? NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, दिस विल बी प्लस एम ग्रुप, है ना, बिकॉज की atom is having lone pair. Similarly, what else? OH will be plus M group. OCH3 will be plus M group. Any halogen, fluorine, chlorine, bromine will be plus M group, है ना, because it has a lone pair electron. ठीक है, so these are the examples of plus M group. माइनस M group में क्या क्या आ जाएंगे? NO2 will be minus M. Then SO3H will also be minus M because key atom is attached with oxygen. Key atom attached with oxygen. Similarly, C double bond O CH3. This is also going to be minus M. और क्या हो सकता है minus M? What else? Aldehyde group, है ना, CHO C double bond O H, aldehyde group. What else? You can have carboxylic acid, COH, which will be minus M. COOR will be minus M. So all of these are examples of what? All of these are examples of minus M group. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर रिविजन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। की एटम, if it has lone pair, it is going to be plus M. Key atom, if it is attached with more electronegative element via multiple bond, it is going to be minus M. याद है ना? You remember vaguely at least? आके बामना Yes, sir. खतीजा, इस ना? ठीक है, Yes, sir. लिखिए जरा इसको। लिख लीजिए तो यस सर, नो सर, डन, वन कुछ बोल दीजिएगा, then I will move on. I'm not going to wait for raising of hands. Done guys, yes or no, please tell me. Yes, No, sir. sir. Done. No, not done, ठीक है। Done, sir. सही है, चलिए क्वेश्चंस है, ठीक है ना? क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेंजीन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेंजीन, और बेंजीन में हमने डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। क्या मिलेगा बताइए जरा, टेल मी, व्हाट विल आई गेट? बोलो भाई बोलो, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, लिखने की जरूरत नहीं प्लीज, लीव योर पेन असाइड, कीप योर माइक ऑन। Br2 डालने पे क्या मिलेगा बताइए? Um, अरे BR2 will नोटबुक में be देख, non. Br विल बी देयर, है ना, Br2 नहीं Br होगा, ठीक है, BR. फाइन। नेक्स्ट है आपके पास, आई एम एडिंग HNO3 in the presence of H2SO4. What is going to happen? ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution reaction है? What is the name? HNO3 and H2SO4 both are there. You can use your notebook, keep your pen aside. लिखना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को जवाब देना है। Sulfonation. नहीं, देख के बताइए, अंदाजी नहीं देखना है, देख के बताइए, अभी भी किया ना, याद नहीं होगा, देख के बताइए बिल्कुल। Nitration. नाइट्रेशन, तो एंड टेल मी नाउ, अब Br आ गया ना, सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई Br इज प्लस M और माइनस M। Br इज प्लस M, देख के बताइए यस Minus. ऋषिता। Sir. प्लस M है ना, दिस इज गोइंग टू प्लस M बिकॉज उसके पास लोन पे है ना, going to be plus M. Yes. अब plus M होगा तो it is going to give you what? Two products. The Br will be as it is. You will get NO, sorry, not in meta position. It will get NO2 in the ortho position, and you will get NO2 In the para position. in the para position. ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? दिस इज O
The name of this compound is going to be और है ना, तो O ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? P bromonitrobenzene. नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेम करेंगे, बस हम लोग ऑर्डर को दूसरा कर देते हैं। ठीक है, वी हैव डन ब्रोमिनेशन फर्स्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोमिनेशन। वी हैव डन ब्रोमिनेशन पहले, उसके बाद हम लोगों ने क्या है, क्या नाइट्रेशन किया है। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दीज प्रोडक्ट। नाउ इफ आई, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, अगर हमने क्या किया, लेट अस सी, डोंट राइट ना प्लीज, नॉट डोंट राइट, ठीक है, प्लीज मत लिखिए। देखिए ध्यान से देखिए, इफ आई स्टार्ट विथ नाइट्रेशन HNO3 एंड H2SO4, सो बस तो बेंजीन रिंग में क्या लगेगा, यू विल ऐड अ NO2 ग्रुप। मेक सेंस? करेक्ट है। Yes, sir. अब इसके बाद ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, Br2 in the presence of FeBr3. Now NO2 is what, plus M or minus M? Minus M. Minus M. So how many products I will get, tell me? One product. One product. NO2 यहीं पे है In the और मेटा meta पोजीशन state. में Br आ गया। ठीक है, now what will be the name here? This will be M, M nitro नहीं नाइट्रो, ब्रोमो brom. ब्रोमो ब्रोमो, Br क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, Yes, sir. नाइट्रोबेंजीन, M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान सुनिए जरा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए। लेट अस सपोज यू हैव बेंजीन, आपसे बोला गया हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, आप ये कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। लेट अस सपोज दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट बेंजीन, बेंजीन से ये कह रहे हैं आपको, बेंजीन से कह रहे हैं आप बनाइए एम नाइट्रो, सॉरी एम ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, और दूसरे में कह रहे हैं आप बनाइए पी ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो सी बेंजीन से स्टार्ट करेंगे, सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या करना पड़ेगा। सो इन बोथ द केसेस आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। मेक सेंस? यस और नो, टेल मी। Yes, sir. बेंजीन में आप क्या ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग ब्रोमो ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप, हियर आल्सो यू आर एडिंग ब्रोमो ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप, सो यू हैव टू डू ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन। बट सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा, सीक्वेंस कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज द डिफिकल्ट थिंग। सीक्वेंस कैसे डिसाइड करेंगे, सी हियर गाइस, यू आइडेंटिफाई Br ब्रोमो प्लस M और माइनस M, Plus Plus बोलो M. भाई, प्लस M, एंड नाइट्रो minus Minus M. माइनस M, एंड दिस, ये मेटा है ना, तो मेटा के लिए क्या चाहिए, माइनस M या प्लस M? Minus M. माइनस M, तो माइनस M पहले करेंगे। दैट मीन्स नाइट्रेशन पहले, यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, नंबर 1 में करेंगे नाइट्रेशन और सेकंड स्टेप में कर लेंगे ब्रोमिनेशन। पसंद में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे है ना, सेम चीज यहाँ पे, ब्रोमो इज प्लस M, नाइट्रो इज माइनस M। ब्रोमिनेशन करने पे यानी कि, और आपको क्या चाहिए, यू नीड P, पैरा। पैरा कहाँ मिलेगा, प्लस M या माइनस M में, प्लस M में मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ब्रोमिनेशन, देन वी विल डू नाइट्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए आप। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए एक Yes. आपके पास रिएक्शन बेंजीन है, टोलुइन जानते हैं क्या होता है, टोलुइन, टोलुइन याद है आप लोग को, टोलुइन Yes, याद sir. है, नहीं याद है? Uh, टोलुइन yes, sir. नहीं याद है, टोलुइन ये होता है बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, टोलुइन है ना, तो आपको बनाना है टोलुइन मतलब CH3 जुड़ा हुआ, बट यू नीड टू मेक P नाइट्रो टोलुइन, P नाइट्रो टोलुइन। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रो प्लस M या माइनस M, नाइट्रो Minus M. Minus माइनस M है ना, और
टोलुइन में क्या होगा, CH3 होता है, CH3 क्या है, प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। हाँ देख के बताओ, देख के बताओ। प्लस एम। प्लस एम, प्लस एम। CH3 प्लस एम, ठीक है। तो आप बताइए, और आपको चाहिए पैरा, हाउ विल यू गेट पैरा, माइनस एम से या प्लस एम से? प्लस एम से। प्लस एम, दैट यस मीन्स पहले आप क्या कीजिएगा, यू विल ऐड मिथाइल CH3। CH3 को ऐड करने के लिए क्या करते हैं बताइए जरा, हाउ विल यू ऐड CH3, व्हाट रिएक्शन विल यू डू? What reaction will you do to add CH3 on benzene ring? Friedel-Crafts alkylation. Alkylation, very good. Friedel-Crafts alkylation. और नाइट्रो के लिए क्या करेंगे बताइए? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आके अदर आमना वगैरह बताएं, याद आ रही, समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए जरा। डन एवरीवन? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। एंड आपको हम थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, कंबशन और देयर आर टू वेरी स्मॉल स्मॉल रिएक्शन। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, कंसेप्चुअल नहीं है वो, ना सबसे अच्छी बात है, कंसेप्चुअल नहीं है। सो एडिशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन बेंजीन का,